So once again, we'll come to the share part. I hope it is there. Let's hope for the best. Yes, it is there. It is there. It is there. It is there. Thank you, Zoom, for giving us this opportunity. Thank you. So many people are there. Going on. Okay. So I hope this much is clear to everyone, and then we'll come once again to this part, which was your T, B, D. Yeah. So T, B, D. So T, B, D it is sin alpha. ठीक है, आप लोग सब लोग अपने बुक में लिखेंगे, ओनली यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे. TBD sin alpha. Similarly here also what we'll do is, इसमें ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. So this is your TCB cos alpha. TCB cos of alpha. और ये होगा मेरा TCB sin alpha. TCB sin alpha. बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग. Try to go up. Okay, so this is the case. Now we'll come with the summation f of x and f of y. So we'll talk about this. So summation of f of, पहले हम ले लेते हैं f of x. Summation f of x. ठीक है, right hand side positive. You can take first f of x, f of y. That's not at all a problem. आप कुछ भी ले सकते हैं. Summation f of x, what it is? So TBD cos alpha, which is on the right side, so we will take it positive. So TBD cos of alpha, that is positive. TCB minus में होगा वो, minus of TCB cos of alpha, and TBA, this one, so minus TBA is equals to 0. Equals to 0. Now in this case, we are knowing TBD. TBD हमको पता है. TCD हमको पता है. TCB नहीं पता है और ये भी नहीं पता. That means what? We don't know this and we don't know this. So these are the two things what we are not knowing. ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं अब summation f of y पे. So summation f of y is equals to 0. F of y equals to 0 में क्या दे रहे? So in that case, we'll talk about the two things. One, TBD sin alpha, that is upward direction. So we'll take it TBD sin alpha. What next? Next is your TCB sin alpha. So it is taken as plus TCB sin alpha. Okay, TCB sin alpha. Okay, and VB. So plus VB is equals to 0. Equals to 0. So this is the case. Now in this case, TBD is known to you, VB is known to you. आप TCB निकाल लेंगे यहाँ से. And I hope TCB आपको negative में आने. Just check the answer. Tell me whether it is correct or wrong. So please put it in this chat. TCB is minus 46.98. Is it same, everyone? Someone is getting 109. Someone is getting 109. Okay. So 46.98, please just check. So 109, it is a negative or positive? Okay. Now TBD is to be taken as minus sign. If it is in minus, as I told you, whenever it comes in negative, you have to take it in negative. Whenever it is positive, you have to take it in positive. So here you got, I think so. Negative, yeah. So यहाँ पे आपको करना क्या है? अच्छा मैं लिख देता हूँ, मैं क्लियर लिख देता हूँ तो और आइडिया है. So यहाँ पे like I'll write minus of TBD की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बता सकते हैं?
What was the value of TBD? What was the value of TBD? Anyone? TBD का वैल्यू बताओ. TBD का वैल्यू बताओ बच्चों. 31.33. Okay. So it was minus 31.33. Minus 31.33. Give me a minute, ठीक है. So बच्चों, there is the information for you that just after. Are you able to see the screen? Are you all able to see the screen? Yes, okay. So the student information is like just after my lecture, which is your till 12:45. So you'll be having a chemistry lecture. Okay. So on the same link, you can, if it is there, it is fine. Otherwise, you be ready. The information will be given to you related to the link. Otherwise, इसी link से continue करेंगे. ठीक है. So 12:45 के बाद you will be having a chemistry lecture. Okay. Now coming to once again minus 33. So minus 31.33 करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फा. ये जिनको नहीं समझा है बस उनके लिए है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पीपल आर नोइंग कि मैंने क्लास में भी बताया था कि माइनस TCB साइन अल्फा यू विल बी टेकिंग इट डायरेक्टली. ठीक है. TCB साइन अल्फा इज साइन अल्फा प्लस VB प्लस VB इज इक्वल्स टू 0. अब यहां से वी आर नोइंग VB वैल्यू विच वाज पॉजिटिव. ये तो इधर से हमको TCB मिलेगा. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द TCB वैल्यू? Once again, many people have posted it here, but once again, can you post TCB ka value? So TCB going to be the 31.33 sin alpha minus VB. We can write it in this way: 31.33 sin alpha minus VB. ठीक है, अपॉन साइन अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो इससे मुझे बताओ कि वैल्यू क्या मिल गया. क्या वैल्यू मिली? माइनस में मिला, स्टिल माइनस में मिला. Okay, so they are getting a minus value, that is minus 46.8 या 46.98. हाँ हाँ 46.98 we consider. ठीक है. चलो ये 46.98 की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों. अब हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको पॉजिटिव में डाल देंगे. हाँ चलेगा बच्चों, निश्चय. इट विल बी वर्किंग. 47 भी चलेगा. सो 46.98 पॉजिटिव में करने के बाद व्हाट टू राइट? What to write? Very good, Nitish. Good. So we have to write compression. यहाँ पे compression. बहुत लोगों ने आंसर दिया इनफैक्ट. But good. So TCB you got this value. After this, what you have to do is once again you have to come to this part. ये ऊपर आना है और TBA की वैल्यू निकालना है. So TBA again while substitution प्लीज पुट अ नेगेटिव साइन अलॉन्ग विथ इट. हाँ, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ कैसे करना है, दिखा देता हूँ क्या था ये. सो दैट वाज TBD. ध्यान से देख लो, यू आर मेकिंग मिस्टेक देयर ओनली. सो कॉस अल्फा ये ऐसे लिख दिया हमने, ये माइनस और फिर इधर वापस से माइनस 46.98. As I've told you already that if you are having a minus sign, write it along with minus sign. ये हो गया cos अल्फा, cos अल्फा, और ये है माइनस TBA इक्वल्स टू 0. इधर भी लिखना है आपको TBD के भी जगह पे, वो भी मैं लिख देता हूँ.
ये क्या था, तो -31.33, यस, ठीक है। सो TBA क्या मिल रहा है, इज इट पॉजिटिव? वेरी गुड, पॉजिटिव मिल रहा है बच्चों को। सो TBA यू आर गेटिंग इट एज 4.5, ये आपको मिल रहा है 4.5 न्यूटन, 4.5 न्यूटन। And since it is positive, you have to write here T. T का मतलब है टेंसाइल, ठीक है, T लिखना है। आई होप दिस मच इज क्लियर एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। यस, कम ऑन। If you are not asking a doubt, that understood. Okay. Now we'll go with the joint C. अब हम जॉइंट सी पे जाते हैं, ये तो जॉइंट बी था, अब जॉइंट सी पे जाते। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ बच्चों? फाइन, ठीक है। सो जॉइंट सी पे चलते हैं। चलो, जॉइंट सी का प्रोसीजर आपको पता है अब, हाउ टू डू इट। सो स्टार्ट गोइंग विद इट लिटिल, फटाफट करो, मेरे से फास्ट करो जॉइंट सी के लिए। यू कैन ड्रॉ द FBD ऑल्सो बाय योर ओन, मेरे से फास्ट करो। The case, and there is one like this way, and there is one which is this way. Yes. ठीक है, आप मेरे से फास्ट करो, so that wherever you will be having a doubt, it will be cleared, and you can ask your doubt as well. So ये हो गया आपका एरो बाहर की तरफ, and this way also. ये सारे जो भी बाहर की तरफ एरो है, that all are members, that all are rod, है ना। सो ये हो गया मेरा अल्फा, ये हो गया मेरा alpha, ठीक है। सो ये दिस इज माय TCB, दिस इज माय TBC, this is 60 Newton, and this is your TAC. The same process you have to do. सेम प्रोसेस यू हैव टू डू, जो भी आपने ऐसे इधर किया है, सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस विल बी डूइंग। आई होप नाउ इट इज known to you how to handle such type of numerical. अब आपको समझ में आने लगा है कि ऐसा न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करना। So just do it little faster than me. I need that each and everyone should be doing by their own, and please use the calci। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, बैटरी खत्म नहीं होगा, so you have to do it by your own। So यहाँ पे yes, this is going to be your TBC cos of alpha, TBC sine of alpha, you get TAC sine of alpha, TAC cos of alpha। ठीक है, ओके। सो वेरी गुड, you are doing it very nice। बच्चों तुम वीडियो ऑन करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम कर रहे हो, तुम तो सब गायब हो गए, गायब हो, यू ऑल पीपल आर लाइक, कहीं से छाप लोगे क्या इधर उधर? हम्म, या फिर बाद में सर हम आपका ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दिखा देंगे। इट इज वेरी बैड, you have to solve by your own। So summation of f of y, वीडियो कोई चालू नहीं कर। So f of y positive,
This f of y is positive. So summation f of y is positive. So here it is taken as minus 60. That is downward. Then uh, how do I know, Rachit? You people are not putting on your videos and then मेरे सामने बैठ के solve करो. Then I can understand. Solve कोई कर ही नहीं रहा है कुछ भी. बस TBC sine of minus TBC sine of alpha, then T minus of TAC sine of alpha. TAC sine of alpha और कुछ है equals to 0. So in this case, minus TAC minus TBC. Okay. Now in this case, TBC was my negative. So minus of 46.9. Sine माइनस में होगा TAC की देखते हैं. TAC हमने फाइंड किया है क्या? नहीं किया. ये माइनस 60, ये माइनस TAC साइन अल्फा इक्वल टू 0. सो TAC फाइंड कर लो यहाँ से. It is minus 15.66 Newton. Okay. So minus 15.66 Newton is everyone is getting. Minus 15.66 Newton, which is will convert it into positive value. Newton और ये हो जाएगा कंप्रेशन. पॉजिटिव आया, चेक करो. पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा. नेगेटिव ही आएगा, चेक करो. नीरा गॉट पॉजिटिव, कनक गॉट पॉजिटिव. चेक करो, ध्यान से देखो कैसे आ रहा है. सो TAC ये हो गया मेरा TAC. Similarly, apply summation f of x. रचित को भी पॉजिटिव ही आ रहा है. रचित चेक दिस वन, ये वाला पार्ट. 46.98 इंटू साइन अल्फा किया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना बच्चा, और ये TAC उधर चला जाएगा तो माइनस 60 है ना. रचित चेक करो और बताओ. समेशन f of x equals to 0. राइट हैंड साइड पॉजिटिव. ठीक है. ओके, नेगेटिव आ रहा है. यस. तो समेशन f of x में कौन कौन आएगा? सो TCD and then my plus negative आ रहा है. Yes, correct. TCB and this is your TBC cos alpha. फिर ये वाला माइनस TAC cos alpha, माइनस TAC cos alpha इक्वल्स टू 0. माइनस TAC cos alpha. तो बच्चों यहाँ पे TAC को डालना है ऐसे, माइनस ऑफ 15.6 15.66 cos alpha इक्वल टू 0. TCB माइनस में था, सो माइनस ऑफ 46 पॉइंट माइनस ऑफ 46 पॉइंट कितना 98 cos alpha
ठीक है, और ये हो गया मेरा टी सी डी। ये टी सी, इसमें तो सब कुछ पता है हमको, इसमें हमको सब कुछ पता है, नो नीड टू डू, ये मत करो। ये पता है, टी सी डी भी पता है, टी बी सी भी पता है, टी ए सी भी पता है। नाउ सो विद दिस यू गॉट ऑल द वैल्यूज। बच्चों जल्दी बताओ, सारे वैल्यूज मिल गए क्या? सारे मेंबर्स की वैल्यू मिल गई? एवरीवन, सारे मेंबर्स की वैल्यू मिल गई क्या? एवरीवन। हाँ, अब क्या करना, व्हाट इज द नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। एक टेबल क्रिएट करो। नाउ व्हाट इज द टेबल इज ऑल अबाउट। नाउ सी, तुमको एक टेबल क्रिएट करना है। उस टेबल में क्या क्या होगा? वो टेबल में यू हैव टू क्रिएट द कॉलम, जहां पर सबसे पहले होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फोर्सेस या मेंबर्स। मेंबर्स लिखो चलो, और क्लियरिटी रहेगी। मेंबर्स लिखो, यहाँ पे आप लिखेंगे मेंबर्स। ठीक है, पहला कॉलम होगा तुम्हारा मेंबर्स। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा होगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। डेटा ऑफ मेंबर, डायरेक्शन ऑफ मेंबर नहीं, सिर्फ सिर्फ मेंबर। मेंबर्स, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना कर लिया, मेंबर्स, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो है वो यू विल बी राइटिंग द वेदर इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। ठीक है, एम आई क्लियर विद इट? ये मेंबर्स होगा, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्रेशन और टेंशन। ठीक है, सो यहाँ पे आप मेंशन करिए मेंबर। मेंबर कौन है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले लिख देता हूं मैं एसी। फिर कौन है, तो है सीबी। फिर कौन है, तो लेट्स टेक एबी। फिर कौन है, तो लेट्स टेक सीबी। ठीक है, फिर कौन है, तो दैट इज बीडी। तो टोटल 5 मेंबर हो गए क्या बच्चों? 1 2 3 4 5। So what is the next? Now here you have to put all the positive values ना। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है बच्चों, यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि नेगेटिव साइन क्या लो, लाइक सीबी है, तो सीबी इज दिस वन, सो इट इज 46.9। अंडरस्टूड? टीबीए, तो ये हो गया कौन था, सी था। टीबीए विच इज दिस वन, सो 4.9, 4.9, that is your T. Then you have TAC 15.6. We'll write it 15.6. ये कौन हो गया, कंप्रेशन। TCD है क्या यहाँ पे? ओके, रेस्ट ऑल द टू वैल्यूज यू आर नोइंग, इसके पहले वाले शीट में था। ठीक है, CD was 9. Okay, it was 9 tensile, and BD was somewhere here. BD was -30, so 31.33 दिख रहा है, 31.33, एंड दैट वाज सी। ये हो गया बच्चों कम, फोर्स टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स टेबल। दिस इज योर फोर्स टेबल। ये हो गया तुम्हारा फोर्स टेबल। सो दिस इज द केस वेर यू हैव टू गो विथ फोर्स टेबल। आई होप सबको समझा आया, पक्का?
स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन लास्ट 4 मिनट्स है, so कुछ और डिस्कशन करके फिर we'll stop it and then you can take little bit of time and then you can join a chemistry का lecture. ठीक है, so स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? डन 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 डन, परफेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? लास्ट में बनाना जरूरी है, यस बनाना जरूरी है। एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? जितने मेंबर्स है, लाइक सपोज दैट इफ 5 मेंबर्स आर देयर तो 8 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का आ जाएगा। 2-3 मेंबर्स है तो 5 मार्क्स का आ जाएगा, लाइक दैट। सबने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया है। आई जस्ट स्टॉप द शेयर। ओके, एंड नाउ द you can have the discussion. Yes, anyone who didn't understood anything, please ask. Come on, last 3 minutes, the time is running. फटाफट में ले लेता हूँ questions. Now based on this method of joints के जितने भी न्यूमेरिकल है बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल हैं बुक में, उसके यही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। ठीक है, उसका कोई भी देयर इज नथिंग डिफरेंट प्रोसीजर यू विल बी फाइंडिंग आउट। सो व्हाट यू कैन डू इज नाउ you will be going with your procedure, whatever the procedure I have taught you. That same procedure you can apply with any type of your truss, going with the method of joints. तो मेथड ऑफ जॉइंट्स आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल होगा मेथड ऑफ जॉइंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट लिख के रखो। ठीक है, समवेयर एक नोट लिख के रखो कि इफ कैंटिलीवर ट्रस इज गिवन, if cantilever truss is given, कैंटिलीवर ट्रस बच्चों, ठीक है, तो कैंटिलीवर ट्रस दिखता कैसे देख लेते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं व्हाइट बोर्ड पे। कैंटिलीवर ट्रस कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे रहेगा, ऐसा, लेट्स टेक ऐसा, ऐसा, एंड ये सब ऐसा होगा, ऐसा होगा कैंटिलीवर ट्रस, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे रखा हो सके। सो दिस टाइप ऑफ कैंटिलीवर ट्रस। सो कैंटिलीवर ट्रस में एक चीज डिफरेंट होती है क्या? सो m इज इक्वल टू 2j माइनस आर जो होता है ना बच्चों, m इज इक्वल टू 2j माइनस आर, उस r के जगह पे वी हैव टू डायरेक्टली राइट 4। ठीक है, दैट इज ओनली द चेंज व्हाट यू विल फाइंड। सो इन द केस ऑफ अ कैंटिलीवर ट्रस कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर अगर मिलेगा, this way if you get a structure, that means here also it is hinge and here also it is hinge. That means hinge के पास कितने reactions होते हैं? 2 reactions. So 2 reactions that what we consider in the case of the cantilever truss. ठीक है, मैं फिर से स्टॉप करता हूँ और फिर किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। वो है कैंटिलीवर ट्रस बच्चों। ठीक है, सो I expect from you anytime now the meeting can be closed. I expect from you that you are supposed to solve the numerical based on method of joint. जितने भी method of joints के numericals हैं वो method of joints के numerical almost खत्म हो चुके हैं। आप उसको ट्राई करिए, नहीं समझ में आता you can ask it in a class। ठीक है, method of joints is over. Still I can take it if the time permits 1 or 2 problems based on it. As you have seen that it is taking much more time. So बेस्ड ऑन दैट सर आपने नोट का स्टेटमेंट पूरा नहीं बोला। अच्छा, नोट का स्टेटमेंट ये बोला कि फॉर कैंटिलीवर ट्रस m इज इक्वल टू 2j माइनस 4 लेना है, 4 4 m इज इक्वल टू 2j माइनस